These include the Budapest Airport, the beautiful bridges of Danuba River, and the beautiful trains running along the bank of the Danuba River. Along with this, there is an ancient sculpture on Gilhalach and the 1,000-year-old house, and also a waterfall which is one of the most beautiful waterfall in the whole world. We were today our journey started from Frankfurt and continued to Nuremberg and then reached to Passau. Hello viewers, how are you all? I hope you are doing good. Firstly, I warmly welcome to all of you in my channel Travel Europe and me. Today's video going to be very interesting because we will travel from Germany to Hungary via car. Here we will see very interesting and beautiful places. About 27 to 28 km away from the Passau is the Austrian border. About 140 km away from the Austrian border, a very beautiful and a huge city is present, which is also known as Linz. Then it will be 200 km or 250 km from almost Wien. About 60 km from Wien will start the border of Vitrigod, Hungary. Next will be the Budapest city at a distance of 200 or 250 km, and my destination for today is the Budapest airport, which is almost 28 to 30 km away from the city. Yes, there is heavy traffic near the airport, but in 30 to 40 minutes we will arrive. I have a little work to do at the airport, then we will go to the Budapest Central. In German, it is also called Centrum, which is its main center. After that, we will see railway station, airport, and the other areas. Okay, the airport is 21 km away from me. In front of it, it can see the DHL building next to the main gate of airport. We were done in most interesting thing. Here is that I will show you the whole city along with the airport. Yes, the whole city. There is famous waterfall Gilhalach which fall into the river of Danuba. Both river and the city are very ancient and beautiful. Now I will tell you about the Danuba river. It is very long river. It starts from Germany to Austria and then through Slovakia, Slovenia, Hungary and touches Romania, which is almost 2,843 km. It passes through different countries, hence it has different names. As we walk along, we see the rural areas of Hungary. Yes, the rural areas of Hungary, where wheat is grown, corn is cultivated, mustard oil is grown here. Yes, mustard oil is exported from here, but due to the war problem in Ukraine, its export has decreased a little. Due to the war that is going on in Ukraine, it has created many problems in Germany. The mustard oil does not have the same smell as in the mustard oil have in Pakistan because it is purified and it is refined. I have come to Link Road from the motorway to visit the villages here. Yes, मोटरवे से लिंक रोड पर आने का सिर्फ एक मकसद था कि हम लोग हंगरी के देहाती इलाकों को देख सकें. The purpose of visiting the villages here is to search that what things are present in the rural areas. Okay viewers, I will tell you, I have to tell you that there are many laws which they have strictly followed. हंगरी के अंदर सबसे मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं. कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबके लिए रूल्स आर इक्वल. हर इंसान ने वो रूल्स फॉलो करने हैं बाय हुक और बाय क्रुक. यस ऑफ कोर्स, लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन. Whoever does not follow the rule is strictly punished.
यस ऑफ कोर्स, हर वो इंसान जो रूल फॉलो नहीं करेगा उसको इसकी सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। जैसा कि हमारे वहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि रूल्स होते हैं लेकिन पब्लिक से रूल्स को फॉलो नहीं करवाया जाता। लेकिन यूरोप कंट्रीज़ के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, everybody have to follow them. Next we talk about the railway crossing. There are two barriers in front of which the red light is on. When the train approaches, the red light automatically turn on. When the red light turn on, the people there are stopped. Yes, यहाँ पर जो ही रेड लाइट ने ऑन होना है, इसका मतलब है कि ट्रेन ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। वहाँ पर जितनी भी पब्लिक प्रेजेंट है, सबके सब ने वहीं पर रुक जाना है। ये भी वहाँ का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है और सब इसको फॉलो करते हैं। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ग्रीनरी, रिवर्स, हर चीज़ प्रेजेंट है। These countries have greenery, rivers, valleys, each and everything except desert. But खुदा ताला की ज़ात ने ये सहराओं की नेमत भी पाकिस्तान को बख्शी है। अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना पाकिस्तान का यूरोप कंट्रीज़ का, तो यूरोप कंट्रीज़ में सफाई बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यूरोप कंट्रीज़ के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और यूरोप कंट्री में हर इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे नेचर की बात करते हैं ना, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कुदरती चीज़ें हैं, कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं, खूबसूरत तरीन चीज़ें, जैसे कि मरी है, नारान का गान है, गिलगित है, स्वात है। कुछ लिहाज में पाकिस्तान बहुत बेहतर है कुदरती लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन अगर हम तरक्की के लिहाज से देखें, प्रोग्रेस के लिहाज से देखें, तो यूरोप कंट्रीज़ बहुत बेहतर हैं अगर हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। व्यूअर्स, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि हम लोग थोड़े से टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकें। यस, the purpose of my video is that we will show you all much as all possible in very short time. I hope you must like it. Kindly like this video, share it and subscribe my channel for further and more updates. I will meet you soon in next video. Until then, take care of yourself. Bye bye.